metal cutting. And here we can see this single point cutting tool, geometry of single point cutting tool. Here we have the chip removal process that is happened or performed by cutting tools of definite geometry, and these cutting tools can be classified as a single point cutting tool. Like here we can see. Okay, so single point cutting tool, so which is generally used in lathe machine or planer machine or slaughter machine as a multi-point cutting tool used in milling machine, drilling machine and broaching machine. Okay, single point cutting tool used in lathe, planer and slaughter, and multi-point cutting tool used in milling, drilling and broaching. Okay, so chip removal process will be performed by cutting tools, okay, by of the definite geometry. Okay, so these are the tools we can see over here. This tool has a shank, which is base of the tool, and the support of this tool, and holding purpose it is kept as long. Okay, ये जो है आपका टूल का शांक है, जिसको होल्डिंग पर्पस के लिए हम लोग रखते हैं, जो कि सॉलिड होता है और उसका साइज भी ज्यादा होता है टूल के हिसाब से, है ना. देन दिस वन इज व्हाट योर, this is your face. Then we can see this auxiliary cutting edge. This one is auxiliary cutting edge. Okay, and we have here the tool nose radius is there. No tool is very sharp edged, because whenever the rake angle will be reduced, or the rake angle will be there, and as rake angle increases, length of tool is decreases. Okay, and we can see that the tool nose radius is up to 0.1 to 0.2 mm. This is small edge, as we are reducing the stress concentration. Okay, हम लोग उसको वहां पे अगर शार्प एज रहा तो वो ब्लंट हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे स्मॉल रेडियस कर्वेचर वहां पे यूज करते हैं, ताकि वो जल्दी टूट न जाए. Then main cutting edge angle is this. Okay, then flank is this, side wall is what is flank, and here we can see this one. Okay, this is your main flank, and this is what the general nomenclature of your single point cutting tool. So geometry of single point cutting tool. So here we can see this is the perfect geometry what we were trying to see on the book. So here we can see this is the face. Okay, this is nose radius. Okay, and here we can see this tool. Here this is the flank one. This is this what we can say the end cutting edge. This is end cutting edge, and we can see here it is what the base of tool. So I will write here the base of tool. This is the base of this tool. Then end flank, this is what the end flank. End flank. End flank, and we can see this end cutting edge. This is what your end cutting edge. End cutting
end cutting edge. Okay, after that we can see this is nose radius. Here we can see this is the side flank. This is a side flank of this tool. Okay, हम लोग एंगल्स देखेंगे. एंगल्स किसके साथ कौन सा है? एंड फ्लैंक एंड फेस. ये दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो एंगल क्या है? एंड कटिंग एज एंगल. एंड कटिंग एज एंगल. बाहर रख दो. Okay, end cutting edge. Then we have seen here shank, upper face of shank. shank का ऊपर का फेस और ये जो है फेस, ये दोनों के बीच का जो एंगल है, that is what the side rake angle. Side rake we can call it as. Okay, side rake angle. Then axis जो है हमारा, axis के साथ इस कटिंग एज का जो एंगल है, ये कटिंग एज है हमारा, ये वाला है ना, ये कटिंग एज है. ओके, इस कटिंग एज का एक्सिस के साथ जो एंगल हो जाएगा, वो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? बैक रेक एंगल. बैक रेक एंगल. ओके, देन ये फ्लैंक का हमारा शैंक का वर्टिकल फेस के साथ जो एंगल होगा, है ना, ये जो एंगल है, that is called as the side relief angle. That is called as the side relief angle. Again, flank का एक्सिस के साथ जो एंगल रहेगा, that is your side cutting edge angle. Side cutting edge angle. Okay. Then here we have, this is what main. This is called as the main cutting edge. Okay, this is what called as the axis. Also we can call it as, this is the axis, and the angle of this this end clearance or end relief angle. Okay, with this face of end flank. Okay, the angle between the end flank and the axis, clearance angle or end relief angle, right? So we have seen every angle. Now we will see it in three views. So how we can develop this cutting edge angle? Say back rake angle. This is back rake angle. This one and this one is the same. ये दोनों सेम है. उसके बाद एंड कटिंग एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, दिस वन एंड दिस वन इज द सेम. ओके, we will make it as a rectangle. Okay, now we can see this side cutting edge angle. Side cutting edge. Side cutting edge. Cutting edge angle. This one is your side cutting edge angle. Okay, here we can see end relief angle. This is your end relief angle. We have here end relief angle, end relief angle. This is one your end relief angle we can see. Then side relief angle we can see over here. This is side relief angle. Okay, side relief angle, end relief हो गया. This is side relief angle. Sorry, this is not the side relief angle. This is side relief angle. This is side relief angle relevant to this one.
Then side rake angle, we can see over here. This is rake angle, side rake angle. We can see this side rake angle. Okay, all angles we can see in this orthographic view also, right? Then we can see the next one, the geometry of single point cutting tool. Okay, in this we have seen all these geometries and tool point or node radius, side relief angle, end relief angle, side cutting edge angle, end cutting edge angle, side rake angle, and back rake angle. Okay, so we can see original tool, but we can see for the turning process, and this is what the turning process is going on over here. The chip formation is continuous, and here we can see this cutting is on progress. Okay, so this face is cutting, that means this face is cutting, this face is cutting the material, remove the material, right? So geometry of a single point cutting tool. So shank is what? It is used as a tool holder. Shank is what? Tool holder, or we can say the gripping purpose tool in the frame, or holding purpose. This is the shank. Okay, then we have flank. Where is flank? This is the flank. Okay, this flank is what? The surface of the cutting edge, or the surface adjustment to the cutting edge of the tool, right? Surface of the cutting edge, or we can say the surface adjacent to the cutting edge. So this is cutting edge, and उसको adjacent कौन सा है? ये flank है अपना, ठीक है? फेस कौन सा है? ये ऊपर वाला फेस है, ये वाला फेस है. फेस किसको बोल सकते हैं हम लोग? दिस इज द सरफेस ऑफ द टूल वेयर चिप स्लाइड्स अलोंग द टॉप ऑफ इट्स सरफेस. तो इसके ऊपर से चिप्स जो निकल रही है वो स्लाइड हो जाती है. देन बेस किसको बोलते हैं? बेस यहाँ पे है, ये बेस है, राइट? ये बेस है. बेस किसको बोलते हैं हम लोग? इज द बेयरिंग सरफेस ऑफ द टूल, and this base is held in a tool holder, or it is directly clamped in the tool post. Okay, it is directly clamped into the tool post. Okay, so इसके साथ वहां पे बेस को होल्ड किया जाता है, ठीक है? Heel is what? Is the intersection of the flank and base. Heel कहाँ पे है? In the intersection of the flank and base of the cutting tool. Flank and the base of cutting tool. Flank किधर है? ये flank and the base of the cutting tool. बराबर है? ये heel है यहाँ पे. This is your heel. Okay, then nose, it is the point where the base cutting edge angle and side cutting edge angle meets. Base side cutting edge angle, side cutting edge and side cutting edge and base cutting edge. So दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहां पे उसको नोज बोलते हैं हम लोग. ये जो नोज रेडियस यहाँ पे है, ये नोज है आपका, है ना? ये नोज है. कटिंग एजेस, द फेस एज ऑन द फेस, द फेस एज ऑन द फेस ऑफ द टूल दैट रिमूव्स द मटेरियल. ये जो हम लोगों ने बोला था, ये क्या है? कटिंग एज. बराबर है? टूल एंगल्स, इसमें बहुत सारे एंगल्स है, बराबर है? जैसे कि कटिंग एज एंगल, साइड रेक एंगल, then back rake angle, side relief angle, side cutting edge angle, clearance ring angle, okay, and so on.
सो इसमें नोज रेडियस भी हम लोग देखते हैं. व्हाट इज द नोज रेडियस? जहाँ पे नोज है इसका वहां पे बॉल राउंड शेप वहां पे हम लोग बनाते हैं. जैसे नोज रेडियस विल बी प्रोवाइडेड लॉन्ग लाइफ फॉर लॉन्ग लाइफ एंड ऑल्सो गुड सरफेस फिनिश with it sharp point on the nose. It has a high stress and leaves its path cut. Longer nose radius will give a raise to the chatter. Chatter हो सकता है अगर longer nose radius रहे तो. Then next we can see over here. Side cutting edge angle. It is what the angle between the side cutting edge and the side of the tool shank. कहाँ पे है? Cutting edge and side of the tool shank. Cutting edge कहाँ पे है? This is cutting edge and side of the tool shank. Okay. टूल शैंक की साइड ये है. ये दोनों में जो एंगल है वो क्या है? साइड कटिंग एज एंगल. यहाँ पे सॉरी साइड कटिंग एज एंगल. ओके. एंड एंड कटिंग एज एंगल. एंड कटिंग एज एंगल कहाँ पे है? एंड कटिंग एज एंगल यहाँ पे है. ठीक है, ये वाला. सो द पोर्शन ऑफ immediate below to the side cutting edge. Side cutting edge के below पाथ जो एंगल है that is called as the side cutting edge side relief angle. End relief angle, angle between the base perpendicular to the line and the end flank. End relief angle, where it is end relief angle. Is side relief angle. Then end relief angle is where is this? End relief angle. See here. Okay. Then back rake angle, the angle measured along the plane perpendicular through the side cutting edge in between the tool face and the perpendicular line to the base. Okay. The side rake angle is what the angle between the parallel lines of the base and the face of the tool that is measured if the plane perpendicular to the side edge and base. Right. So this is what the nomenclature of the tool. Okay. So we can see that in side figure. So right cut tool is what? A right cut tool is the tool in which the main cutting edge faces the headstock. हेडस्टॉक की तरफ अगर रहे तो राइट कट टूल इसको बोल सकते हैं हम लोग. हेडस्टॉक अभी ये टूल इस तरीके से फिक्स किया है तो हेडस्टॉक किधर रहेगा? इधर हेडस्टॉक रहेगा और इधर टेल स्टॉक रहेगा. बराबर है? बराबर है ना? यहाँ पे टूल वर्कपीस फिक्स रहेगा है ना, और ये टूल यहाँ से ऐसा मूव होते जाएगा. एंड व्हेन इट इज क्लैम्प्ड and it is in this case the tool cuts from the right to left. Left cut tools ये कब होगा? In this case the main cutting edge faces the tail stalk of the lathe and consequently the tool cuts from left to right action in figure. ये यहाँ पे ये left cut tool है, right? टूल प्लेन्स इसको बोलते हैं डिफाइन एज द एंगल टूल एंगल्स सम रेफरेंस प्लेन्स आर सजेस्टेड दैट इज टूल प्लेन्स. द बेसिक प्लेन इज द प्लेन कंटेनिंग टूल बेस. Then the auxiliary plane main cutting edge, see auxiliary plane perpendicular to the projection of main cutting edge. Tool angles we can see here. Auxiliary plane is this and basic planes are there, so we can see the clearance angle. It is angle between the main flank and the auxiliary
plane measured in the auxiliary plane. So wedge angle, that is beta, is the angle between the tool face and the main flank measured in the auxiliary plane C. Then we can see the rake angle gamma. It is the angle between the tool face and the plane passing through the point of the intersection of the main cutting edge with auxiliary plane C. रेक एंगल हम लोगों ने देखा, देन कटिंग वेज एंगल देखा है. ओके, दैट इज द सम ऑफ क्लियरेंस एंगल एंड द वेज एंगल. अकॉर्डिंग टू द फिगर वी कैन सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 degree. Where is the diagram? Here we can see the alpha plus beta plus gamma whole, it is called as 90 degree. Okay, auxiliary angles we have seen. Nose radius or nose angle is there, setting angles is there. Okay, that is not of our use. You can see requirements of tool materials. So tool material should be hard and hot hardness, because जब भी टूल कटिंग हो जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स उसके ऊपर आता है, और उस फोर्स की वजह से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन वहां पे क्रिएट हो जाता है, और जहां पे भी फ्रिक्शन होता है वहां पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से टूल कितने सारे इस फ्रिक्शन में रहता है, तो वो साहजिक मतलब ऑब्वियसली क्या हो जाता है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है. बराबर है ना? यस सर. हाँ, इंक्रीज टेम्परेचर अगर हुआ तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है. तो इसकी वजह से वहां पे बेंडिंग हो सकता है टूल का, या फिर टूल वियर बहुत जल्दी से हो सकता है. इसके लिए हाई हॉट हार्डनेस जिसका है, मतलब कितना भी उसको गर्म हुआ फिर भी वो अपना स्ट्रेंथ हो ना पाए, ऐसा मटेरियल हमको हाई हार्डनेस एंड हाई हॉट हार्डनेस का चाहिए. हाई वियर रेजिस्टेंस का होना चाहिए, कितना भी हार्ड मटेरियल क्यों ना हो वर्कपीस, वो टूल का वियर नहीं होना चाहिए. देन हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस, स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए और टफनेस भी होनी चाहिए. टफनेस यानी कितना भी हार्ड मटेरियल रहा, अगर कोई कंटामिनेटेड पार्ट भी रहा तो वहां पे वो स्क्रैचेस वगैरह टूल के ऊपर नहीं आना चाहिए. हाई थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी देयर. अगर टेम्परेचर भी बढ़ गया तो वो कंडक्टिविटी की वजह से वो निकल भी जाए उतनी आसानी से. एंड द टूल शुड हैव अ लो कॉस्ट, दैट इज द रिक्वायरमेंट. सो कॉमन टूल मटेरियल्स आर देयर. टूल कार्बन स्टील, alloy tool steel, then high speed steel means बहुत high speed के ऊपर भी उसका strength कम नहीं होता है, that is called as high speed steel. Then cemented carbide, it has a 2-3 types, that is straight tungsten cemented carbide, titanium tungsten cemented carbide and titanium tantalum tungsten cemented carbides. These are the 3 cemented carbides we can use over here. There are some ceramic tools also used made by compacting followed by sintering of aluminum oxide and at a high temperature like 70 degrees Celsius. Okay, so they have high cutting speed with higher surface finish and no coolant is required for these tools. Diamond tool is also used sometimes, but here we can see the diamonds are hardest material, they can work up to 15 degrees Celsius and it is found in nature or synthetically produced from the ordinary graphite by subjecting it to the extremely high pressures and temperatures. Nitride, cuboid boron nitride is the hardest known material next to the diamond. It is meant to transform
the crystal structure of the carbon from hexagonal to cubic. So high speed steel is the or carbon tool. Cubic carbon nitride (CBN) material is just a lower hardness or lower to the your diamond tool, and we can see this diamond tool one by one, one by one, one by one. We can see the strength. Maximum cutting speed of carbon tool steel is 60, and high tool life. High speed steel has a good tool life with 100 cutting speed at very high cutting speed, very high low. Everything has been given over here from 0 to 100. वो ईमेल आईडी जैसे ईमेल हम खोलते हो ना ओपन करते हो ना ईमेल आईडी होना पहले So you can see here this was the hardness, Rockwell hardness versus temperature graph. As temperature increases, the tool life or hardness will decrease every time for every material. So methods of fixation of sintered carbide or ceramic diamond tools. So this is not of any use for us. So we have other materials also, other points also to discuss. So we have here the tool inserts, sintered carbide or ceramic diamond tools that are used or to be inserted inside the material. We can see over here some of the material has been removed, and in place of that higher carbon tools that will be used over there instead of that. Here these are the tool inserts we can show. You can see over here. Now there are disadvantages of this single point cutting tool. Mechanical clamping of the cutting insert does not always ensure surface stiffness, contact stiffness, that it is sufficiently high to prevent the vibration which develops in the machining. So the vibration shorten the life of the insert and often produces machine surface with poor finish. Clamping arrangement is often comparatively large size, which may